Dear children, heartiest welcome in English class. How are you? Hope that all of you are well and safe at your home. Dear children, today we read a poem that is Dad and the Cat and the Tree of your book Honeycomb. Dear children, this poem is written at the end of chapter 7, that is the invention of Vita Wonk in your book. I divided this poem in two parts as well as in 7 stanzas for explanation in bilingual language. Dear children, these are expected learning outcomes which will be achieved by us after understanding this poem. In previous video, we understand the first part of this poem which includes first 3 stanzas. प्यारे बच्चों, उसमें हमने जाना था कि एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है और फंस जाती है। कवि के पिताजी उसे उतारने की जिम्मेवारी लेते हैं। कवि के पिताजी पहला प्रयास करते हैं परंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाते। हालांकि उनकी माताजी उन्हें बार बार गिरने की चेतावनी भी देती है, परंतु कवि के पिताजी हार नहीं मानते और दूसरे प्रयास की कोशिश करते हैं। नाउ डियर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पोम. Let's start. Now, stanza 4. Let's read these lines first. Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up. On a branch, it broke. Dad landed, wallop. Back on the deck, Mum said, Stop it. You will break your neck. Now, let's explain these lines. First, reference. The above lines have been taken from Kit Wright's poem Dad and the Cat and the Tree. Explanation. The poet further describes that his father ignores his wife's warning. Still laughing, he swung himself on a branch. But this time again, branch on which his father swung broke down, and his father was again on the ground. The poet's mother begged him to stop as he might break his neck from falling again and again. आओ बच्चों, इन पंक्तियों को हिंदी में भी जानें. सर्वप्रथम संदर्भ. प्रस्तुत पंक्तियां किट राइट की कविता डैड एंड द कैट एंड द ट्री से ली गई हैं. व्याख्या. कवि वर्णन करते हुए कहता है कि उसके पिताजी ने अपनी पत्नी की चेतावनी को नजरअंदाज किया. हंसते हुए वह उस शाखा पर झूल गए, परंतु इस बार फिर जिस शाखा पर उसके पिताजी झूले वह टूट गई और पिताजी फिर जमीन पर आ पड़े. कवि की माताजी ने उनसे रुकने के लिए कहा क्योंकि वह बार बार गिरने से अपना पैर तोड़ सकते हैं. नाउ स्टैंजा 5. लेट्स रीड दीज लाइंस फर्स्ट. रबिश, सेड डैड. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी. Easy as winking. To a climber like me? Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. Now, let's explain these lines. First, reference. The above lines have been taken from Kit Wright's poem Dad and the Cat and the Tree. Explanation. The poet describes that even after repeated warnings from mother, his father made a third attempt because he thought himself to be an adept climber. He climbed up the high garden wall and this time he did not fall. आओ बच्चों, अब इन पंक्तियों को हिंदी में भी जानें. संदर्भ. प्रस्तुत पंक्तियां किट राइट की कविता डैड एंड द कैट एंड द ट्री से ली गई हैं. व्याख्या. कवि वर्णन करता है कि मां के द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी उसके पिताजी ने तीसरी बार कोशिश की क्योंकि वह अपने आप को पेड़ पर चढ़ने में कुशल मानते थे. वह बाग की ऊंची दीवार पर चढ़ गए और इस बार वह गिरे नहीं. नाउ स्टैंजा 6. लेट्स रीड दीज लाइंस फर्स्ट. ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. Now, let's explain these lines. First, reference.
The above lines have been taken from Kit Wright's poem Dad and the Cat and the Tree. Explanation. The poet describes that he leapt high on the tree. He was there right on the cat. The moment the father landed on the cat screamed with fear and sprang to the ground. Landed smoothly on the ground, it seemed content with itself. आओ बच्चों, अब इन पंक्तियों के बारे में हिंदी में भी जानें। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां किट राइट की कविता डैड एंड द कैट एंड द ट्री से ली गई हैं। व्याख्या: कवि वर्णन करता है कि वह पेड़ की ऊंची टहनी पर कूद गए। वह ठीक बिल्ली के ऊपर जा गिरे। जैसे ही पिताजी बिल्ली पर गिरे, बिल्ली डर के मारे चीख पड़ी और जमीन पर उछल पड़ी। वह जमीन पर आराम से उतरी। यह अपने आप में संतुष्ट लग रही थी। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम, दैट इज स्टैंजा 7. Let's read these lines first. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree. Now let's explain these lines. First, reference. The above lines have been taken from Kit Wright's poem Dad and the Cat and the Tree. Explanation. The poet in these lines describes the father's poor state that having safely landed on the ground, the cat was smiling arrogantly while his father got stuck on the tree. आओ बच्चों, अब इन पंक्तियों को हिंदी में भी समझें। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां किट राइट की कविता डैड एंड द कैट एंड द ट्री से ली गई हैं। व्याख्या: इन पंक्तियों में कवि पिताजी की बुरी स्थिति के बारे में वर्णन करता है। सुरक्षित रूप में जमीन पर उतरकर बिल्ली अहंकार से मुस्कुरा रही थी, जबकि उसके पिताजी पेड़ पर फंस चुके थे। Dear children, this is the second part of the poem, that is Dad and the Cat and the Tree. I hope you understand this poem very well. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this poem. Thank you. Be happy and safe. धन्यवाद। खुश और सुरक्षित रहो।